Hi everyone, I'm Rahul Verma, and in this video we will discuss your chapter The Sun and the Wind. So let's start. So first we will discuss the explanation of the chapter, then we will come to the question and answers part. So let's start. The name of the chapter is The Sun and the Wind. One day the sun and the wind met on the hilltop. It was a beautiful morning. The sun was shining in the sky. A wind was blowing gently. A man was walking down the road. He was wearing a coat. The sun and the wind started talking. सो स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि एक अच्छा दिन होता है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग होती है, सन और विंड आपस में बात करते हैं कि एक मैन रोड क्रॉस कर रहा होता है, वो उसे देख के अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो विंड स्टार्ट्स द डिस्कशन. विंड, हाउ आर यू? सन, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू? विंड, आई एम ओके, लेट्स हैव अ बैट टुडे. डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड? लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट. सन, आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज स्ट्रॉन्गर. तो सन और विंड में बैट लग जाती है कि जो भी उस मैन का कोट उतरवा सकेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. सो द विंड ब्लू विद ऑल हिज माइट. Man, how strong the wind is today. It is blowing my coat away. I must hold tightly around myself. The wind blew harder and harder, but was unable to remove the man's coat. तो हवा काफी तेजी से बहने लगती है. मैन परेशान हो जाता है क्योंकि बार बार उसका कोट उड़ रहा होता है, तो वो उसे और ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है, लेकिन विंड उसे उड़ा नहीं पाती है. सो विंड उसके बाद कहती है कि विंड, डियर सन, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ. सन, now let me try. I will make him feel hotter and hotter. The sun shone brighter and brighter. Man, wiping his face, I must take off my coat. तो उसके बाद सन ट्राई करता है. सन गर्मी बढ़ा देता है, जिससे उस मैन को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है और वो अपना कोट उतार देता है. I cannot bear the scorching heat of the sun. Sun, dear wind, I won. I have made him take off his coat. Wind, congratulations, dear. You are indeed stronger than me. Wind represents the outer force, whereas the sun could make the person feel the heat inside. So that's all about this chapter. Let's discuss the question and answers now. So these are some words and their meanings. The first word is hilltop. Hilltop का मतलब होता है पहाड़ की चोटी. देन ब्लोइंग, ब्लोइंग का मतलब है किसी चीज का बहना, लाइक हवा बहती है तो उसे हम कहते हैं विंड इज ब्लोइंग. बैट, बैट का मतलब होता है शर्त लगाना. टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतार देना. माइट, माइट का मतलब होता है प्रचुर शक्ति. देन परसुएशन, परसुएशन का मतलब होता है किसी को समझाना बुझाना. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज टू हॉट, आई कांट डैश द हीट. So the answer to this question is beer. I can't bear the heat. Next question. My father patted me dash on my back. So the answer to this question is gently. My father patted me gently on my back. The next question is, the wind dash away the leaves. The answer to this question is blew. The wind blew away the leaves. Next question. Her face dash with a glowing smile. The answer to this question is shone. Her face shone with a glowing smile. Next question is, dash my hand gently so that I may not fall. The answer to this question is hold. Hold my hand gently so that I may not fall. Now next question. Again the filling the blanks questions. She is dash friends I have. She is the tallest friend I have. Next question is, apples are dash than mangoes. So the answer is apples are better than mangoes. Next question, which is the dash city in the world? The answer to this question is largest. Which is the largest city in the world? Next question, May is the dash month. The answer to this question is May is the hottest month. Cotton is dash than wood. The answer to this question is cotton is lighter than wood. Next question is, orange is not so dash as guava. The answer to this question is
Orange is not so sweet as guava. Next question. My aunt is dash than my mother. So the answer is my aunt is fatter than my mother. So that's all from my side. Thank you so much.